Good morning student. Today we'll discuss here class 11 subject physics chapter number फर्स्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन को ड्राइव करना. उसमें 12 क्वांटिटीज़ हमने ड्राइव कर ली थी एंड इस वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करते हैं. ओके, 13 क्वांटिटी. इम्पल्स. Impulse is equal to force into टाइम. ओके, शॉर्टेस्ट टाइम में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स. जैसे एक क्रिकेटर हिट करता है बॉल पर तो मिनिमम टाइम के लिए उस पर हिट करता है. ओके, तो वो क्या है? इम्पल्स. इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से एंड टाइम को डेल्टा टी. सो फॉर्मूला एफ इंटू डेल्टा टी. और डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 और टी डायमेंशन डेल्टा टी डायमेंशन कैपिटल टी इन स्क्वायर ब्रैकेट. सो एम एल टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 1. एंड नेक्स्ट 14 टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स एफ डिस्टेंस फोर्स डायमेंशन डायमेंशन ऐड करते हैं. फोर्स डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 एंड डिस्टेंस एल. ओके, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. ओके, टॉर्क डायमेंशन ऑफ टॉर्क is ml square t minus 2. And next angle is equal to arc over radius. Arc dimension of arc L and dimension of radius L. So L minus 1 over minus 1. So L power 0. So it is dimensionless quantity. It is dimensionless quantity. And next 16 frequency. Frequency is equal to 1 over time period. Okay, time period, dimension of time period t. So t to the power minus 1. Okay, next moment of inertia. Okay, I is equal to m r square. Mass into perpendicular distance. So dimension of mass capital M and distance dimension L square. So m L square. Okay, next 18 charge. Charge is equal to current into time. Current को represent current dimension of current A and time t. So dimension of charge 80.
80. And next 19, surface tension. Surface tension is equal to force over area. Dimension of force F is equal to ma ml t minus 2. F is equal to ma ml t minus 2, and area dimension L square. So dimension of surface tension m L power minus 1, and surface tension equals to force over area. Force force F is equal to ma ml t minus 2, and area dimension force over surface tension is equal to T is equal to F over L होता है, यहाँ पर लेंथ आएगा. ओके, F over L. So L. So m L 1 minus 1 and t power minus 2. So surface tension mt minus 2. Okay, dimension of surface tension mt minus 2. Dimension of surface tension st. And next dimension of potential difference B is equal to W over Q. W work means F into S ml square t minus 2, and charge 80 A into T. So m L square A minus 1 and T power minus 3. Okay, dimension of potential difference is equal to m L square A minus 1 and T minus 3. And next dimension of resistance by Ohm's law. V is equal to IR, so R is equal to V over I. And dimension of V m a to the power minus 1 L square and T power minus 3 over I. Dimension of I A, so m a to the power minus 2 L square and T to the power minus 3. Okay, dimension of resistance. Okay, next dimension of viscosity, coefficient of viscosity. Next 21, 22, dimension of coefficient viscosity. F is equal to 6 pi eta r b. So viscosity coefficient eta is equal to F over 6 pi r b, and
6 5 is constant, so dimension of force ml t minus 2, and r dimension L and v dimension lt minus 1. So L से L कैंसिल, ओके, m L to power minus 1 and t to power minus 1. So dimension of coefficient viscosity is ml minus 1 t minus 1. And next, stress. Stress equals to restoring force over area. Okay, stress equals to restoring force over area. So restoring force, dimension of restoring force ml t minus 2 over area dimension L square. So m L to power minus 1 and t to power minus 2. And next, strain. Strain is equal to change in length over length is equal to dimension of length L and change in length L and length L. So L to the power 1 minus 1 means L to the power 0. So it is dimensionless quantity. Okay, thank you.